हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमा नागर जी से। शी हैज़ मोर देन 25 years of experience in teaching IELTS and SAT and सीमा नागर जी सर्टिफाइड हैं ब्रिटिश काउंसिल से फॉर टीचिंग IELTS एंड SAT ट्रेनिंग। सो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनके वैल्यूबल टिप्स और ट्रिक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि उनके स्टूडेंट्स SAT में अच्छा स्कोर कर पाएँ। Alright, so let's welcome Seema Nagar ji. So thank you so much Seema ji, thank you so much for joining us. I know SAT is just around the corner, तो आपके लिए बहुत difficult होगा time निकालने के लिए, but I just wanted to steal you for some time so that आप अपने valuable tips और tricks दे पाएँ हमारे viewers को, हमारी audience को. So thank you so much for joining us. Thanks Sonali, and thanks for inviting me. So it's a pleasure inviting me. Thank you. Yeah. Great. Okay, so we'll quickly dive into the details about SAT and we'll address the elephant in the room जो कि है digital SAT because I know there are so many students जो कि SAT पहली बार देंगे या फिर digital SAT पहली बार देंगे, तो उनके लिए हमारे पास में क्या है, like what is digital SAT? So Sonali, एक बड़ी अच्छी चीज जो बच्चों के लिए है, that it is not at all difficult. So काफी इजी बना दिया गया है इसे डिजिटल SAT को। अगर आप पूछते हो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैं I'll explain you one by one. पहली चीज जो है, there are 3 important formatting changes and 3 important content changes. Okay. डिफरेंट अगर मैं आपको बोलूं तो टाइम का मेजर डिफरेंस, then scoring is same. If I talk about time old SATs were for 100 minutes हमारा इंग्लिश का पहले जो ओल्ड SAT था, now it is 64 minutes, maths 80 minutes and new is 70 minutes and 15 minutes जो है break है हमारा old SATs का, now it will be 10 minutes. So old SATs were 3 hours 15 minutes and this would be around 2 hours 24 minutes. Great. So this is the first and the foremost change. Second thing is it's change in the structure. Okay. Now this is digital is divided into 2 parts. First would be reading and writing. Now score in English would be 800 only. अब यहाँ पे हमारा एक नई चीज जो आई है, that's called adapting testing. Adaptive testing. Okay. So now what is this adaptive testing? If you don't perform well in module 1, it is going to limit your potential in module 2. Okay. Got it? अगर module 1 आपने अच्छा किया है तो आपका difficulty level will increase. Okay, so I have a question here. आपने बोला अगर आपको easy version मिलता है या फिर अगर आपको difficult version मिलता है, is it like कि कॉलेज बोर्ड ने अलग अलग वर्जन्स बना रखे हैं फॉर डिफिकल्टी, कि एक हार्ड वर्जन हो गया, एक ईजियर वर्जन हो गया, या फिर ऐसे है कि आपने अगर एक क्वेश्चन आया वो आपने सही अगर नहीं किया तो उन्होंने उसका लेवल और लो कर दिया कि चलो इसको आप ट्राई करके देखो ये आपसे होता है या नहीं होता है. सो इज इट दैट वे? Is it like this? Yes, yes, it is like this. So अगर आपका डिफिकल्टी लेवल मॉड्यूल 1 में if you do good, so the difficulty level in second part module 2 will increase. Okay, right. But यहाँ पे ये होगा, you will get in second module the points will also increase. Points will also increase. So it's not that only module 1 में अगर आप अच्छा नहीं अगर आप अच्छा कर रहे हो, second module will be higher version और आपका जो है टेस्टिंग जो पॉइंट्स जो हैं वो भी दोनों आपके इंक्रीज हो जाएंगे. ओके, आपका फिर से मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मतलब दिस इज मैं सिंपल सा करके बता देती हूँ. So adapting testing, there's a big change in this. Each section has got 2 modules. Performance on module 1, okay, or will determine the difficulty level of module 2. So if you get harder version, will be able to score well. If you get module 2, it's a harder version, you'll be able to score well. So if you don't do well in module 1, it will be going to limit your potential in the next module. Okay, or the score also. Fine.
अच्छा, इसमें देयर वाज दिस क्वेश्चन दैट आई हैड, तो कॉलेज बोर्ड ने ये अपनी पॉलिसी सुपर स्कोर की चेंज नहीं की होगी आई थिंक, कि मे बी यू गेट अ गुड स्कोर इन इंग्लिश दिस टाइम एंड नेक्स्ट टाइम यू गेट अ गुड स्कोर इन मैथ, सो सुपर स्कोर आपका अभी भी हो रहा है, नहीं, या फिर वो पॉलिसी चेंज? नहीं, स्कोर की कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, स्कोर की पॉलिसी चेंज नहीं है, परफेक्ट। स्कोर बिल्कुल सेम ही है। सो बाकी डिजिटल डिवाइसेस पे है दैट यू हैव टू टेक योर डिवाइस, डिजिटल मीन्स दैट यू हैव टू टेक योर डिवाइस, you take laptops your because you are no acquainted with that, so it will be easier for you to answer on that. आपके पर आई लिए थिंक easy, अगर आप अपना लैपटॉप नहीं भी लेके जाते हो तो सेंटर्स विल प्रोवाइड यू विद अ they लैपटॉप, will और provide you. You have to register and you have to inform them 1 month prior to that that you will be borrowing it from them. So this is how it goes. Tablets are also allowed. Then second thing in maths, calculators are allowed. You can carry your own calculators. But there's a version always, वो तो version define किया हुआ है कि कौन सा आप ले जा सकते हो. So this is what you get. सो आई थिंक साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, एक नॉर्मल ग्राफिक कैलकुलेटर जो होता है उससे Graphic calculator allowed है, scientific में allowed है, but not very higher version. ओके। Higher version के allowed नहीं. इंग्लिश के पैसेजेस के बारे में भी आई थिंक आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द पैसेजेस हैव चेंज्ड, इट्स बिकम शॉर्टर एंड प्रोबेबली मोर डिफिकल्ट, क्योंकि कम सेंटेंसेस हैं तो इट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा इसमें ज़रूरी हो गया है रादर देन so has it changed? Sonali, here I'll interrupt you. It's not difficult. Easy हो गए हैं. मतलब Okay. काफी easy हो गए हैं. So now first thing is there will be no more long reading old passages, no? वो लंबे बड़े passages पढ़ने पड़ते हैं. So my students used to say, मैम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, आगे हम भूल जाते हैं. Okay? So now there will be only one paragraph and one question. So that means you have in more 27 questions and time has increased, no? So 32 minutes per module. Right. You have here 27 questions and 32 minutes per module. So now you have more time per question. So it's all skill based. So जो हम पहले बच्चों को सिखाते थे कि how to do the paragraphs, आपको कैसे paragraphs करने हैं, किस तरीके से आपको vocabulary निकालनी है, किस तरीके से समझना है. So this is how. अब ये बहुत easy हो गया है. So if you can comprehend the passage very well, आपको strategy अगर पता है, so it becomes very easy. Basically, there will be 10 types of questions. Vocabulary होंगे, punctuations के होंगे, grammar, then note taking questions, supporting data questions, sentence function questions. These are more or less which we have seen on practice test. And paired passages questions होंगे. So अभी काफी easy हो गया है. It's easy है अगर आपको समझ आ रहा है, if you are able to comprehend it, बहुत easy. Okay, so now the main thing that we've called you here for, जो आपकी special tips and tricks हैं वो आप हमें बताइए, so that kids can get a really good score and they can get the admission to whichever university that they want to abroad. So you tell me आपके special tips and tricks जो आप अपने students को देते हैं जिससे वो उनके scores अच्छे आते हैं. Fine. वैसे तो देखिए everything they should know, grammar they should be well versed, बहुत अच्छे से grammar rules and all they should be well versed with that. Punctuation rule उन्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए. Normal general strategy if I talk about, scan the question first. Okay. फटाफट से scan करिए, question को scan करिए, then identify which type of question is it. Whether is it a vocabulary question or is it asking about the evidence or linking devices. So first you have to scan the question and decide how much to read it. Okay. It might be you're getting the answer within if you read first 2 lines and you get the answer. So it's your futile effort to go and read the entire passage. Right. So in a way you're saying कि पहले आप question पढ़ लो, just get to understand कि question से paragraph पे लिखो. Okay. So just just spend like a few seconds on the paragraph, then read the question properly, try to identify what the question is all about, what category of passage
is it, and Yes, what you can exactly start the they ask? information you required in that. No, let's say I'll give you one example. Okay, normally digital asked about the questions like vocabulary. Fine. So if I have a question, which choice completes the text with the most logical and precise word or phrase? That means this question is of vocabulary. Right. Okay, so we have scanned the question first. So Hmm. we just need to how we have to come up. Like normally, I tell my students what are the contrasting words. Hmm. What are the in which you have to add something, which words you have to use in Hmm. linking words. So in case if you're well versed with the like which word, which linking word, where to put, so it becomes very easier for you. So in case if it is adding to the information, so you have to search for the word furthermore in addition to. Okay, Hmm. if it is in contrast, then you have to go by however. So you have to scan the passage that Hmm. is it first few lines are saying something and the second lines last lines of the paragraph are telling us something else. So that's a contradicting information. Then the transition word would be contradictory word. Right. Okay, in contrast. Okay, so if I say that the question, another question, if I ask which choice completes the text with most logical transitions, Hmm. you have to use connectors here. Hmm. You have to use connectors here. So, like, although, however. So these type of connectors when you will be using it. So if it is a contradict each other, तो आपको contradictory connector use करना है. So first scan the passage and find out which question is being asked. So it becomes very easier for you, very easy for you. So what are the other tips that you have to offer? ये तो हमारी इंग्लिश पैसेज का बात हो गई. बाकी इंग्लिश के लिए अगर और कुछ वोकैबुलरी बिल्ड अप करने के लिए किस तरीके से आपको वर्ड्स करने हैं, दिस लाइक एविडेंस कैसे ढूंढने हैं. Evidence, let's say any paragraph would have the main point, explanation and example. Okay, so main point would be if you're not able to get the main point, then what you have to do is you will you'll come to the end, find the word therefore, conclusion, subsequently. So author will be giving you, he will be proving his point. The conclusion would be the main point only. So you can come with the words for therefore. If he's giving the evidence, he'll be using subordinate linkers like since, because, as. Okay, so this is how I teach my students. So this is the strategy. So you devote less time and you get the right answer. So you have to, these things you have to take care of. And yes, थोड़ा सा जब एग्जाम से पहले थोड़ा टाइम पढ़ो मत, ज्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़ा है अपने ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बेसिकली. ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम पे. बट यस, अब आपका अप्रोच आपका आ रहा है, जैसे अब डिजिटल टेस्ट आ रहा है, सो यू हैव टू डिवोट एवरी टाइम. इट इज हैज टू बी डिसिप्लिन स्टडी. This much you have to. Then you have to lock your room, sit there, solve the answers, and see how much time you've been devoting to each question. Right. So I think there's one more trick that I want to add here, because मैंने SAT और ACT का administration किया है, so I've seen how things function there. तो I've seen a lot of students जब वो mock test कर रहे होते हैं, तो sometimes they'll just do कि चलो English कर लेते हैं, we'll do maths later. So it's like आपने एक सेक्शन कर लिया, आप दूसरे सेक्शन को अगर बाद में करोगे या कुछ ब्रेक लेके करोगे, तो आपका एग्जाम टाइम में जब आप वो कर रहे होते हो, तो इट्स लाइक यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ अ ब्रेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. सो इफ यू डोंट हैव द मॉक टेस्ट द वे इट इज एक्चुअली सपोज्ड टू बी, तो उस मॉक टेस्ट उतना फायदा नहीं होता है. नहीं, I think doing it at a stretch, doing it all together, that is something which is very very important, क्योंकि आपका ब्रेन भी एक certain level of activity ही करता है, right? So it's like अगर आपका दिन में एग्जाम दिन में है, and if you are into the habit of sleeping during daytime, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. So आपको वो मतलब 20 days पहले से ही आपको एक मतलब अपनी बॉडी को कस्टम करना पड़ेगा कि भाई हमें इस टाइम पे पेपर देना है, and you are sitting there and you are practicing that
So there are a lot of lifestyle changes जो आपको करने पड़ेंगे अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए कि एग्जाम आने वाला है भाई, get ready for it. So it's not only studying, it's a lot about your mental health, your stress, your anxiety, आप उसको कैसे कम रखते हो. Because you know a lot of times I think आपको कोई चीज़ आ भी रही होती है ना तो भी you're not able to answer it properly because you are stressed about it. आपको एंजाइटी हो रही है तो आप अच्छे खासे काम जो आप यू आर स्किल्ड एट डूइंग वो भी आप कभी कभी नहीं कर पाते हो. सो आई थिंक ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस को थोड़ा दूर रखो और मतलब कोशिश करो to maybe practice meditation or mindfulness, do whatever that makes you feel a little less stressful, and then be confident about yourself and go for it. I think that's the main trick, I think. Great. Okay, so a very interesting segment that I thought ki काफी useful रहेगा because ChatGPT is gaining a lot of popularity these days. So I thought I'll ask ChatGPT to create a 1-month plan for me. Hi, can you create a 1-month SAT plan for me? I'm planning to take SAT in May this year. Although I've been studying for the past 2-3 months, I still feel that I need to take a note of a few more pointers. Create a 1-month plan for me to get a grade score, possibly a 1600, on my next test. Cover all the topics for math and English that I need to study in this duration of 1 month. तो SAT ने मुझे एक 1 मंथ का प्लान बना के दिया जिसमें आई हैव शेयर्ड द डॉक्यूमेंट विद यू. तो उसमें वीक 1 के लिए भी मैथ्स इंग्लिश का बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें आप स्टडी करो. वीक 2 के लिए भी बता रखा है, 3 के लिए, 4 के लिए फिर ये है कि आप सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस टेस्ट कर लो, रिव्यू करो, बाकी सब चीज़ें. सो व्हेन यू रेड द प्लान, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट कि ChatGPT ने मतलब किस तरीके का काम किया है? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? See, Sonali, ठीक है, that's fine that ChatGPT has given you a 1-month plan, but I think so. What my opinion is, every child has got his own potential, no? कि अपना उसे पता होता है कि वो कितना पढ़ सकता है और किस तरीके से पढ़ सकता है और कितना मे बी जैसे मैं पढ़ाती हूँ, so subject and verb agreement, एक बच्चे को मैं 6 दे दूंगी rules, he is able to learn that. But another student is not able to remember 1 or 2 rules also. So every student has got its own capability कि कितना याद करना है, किस तरीके से याद करना है. So here I'll say कि हर बच्चे को अपने हिसाब से अपने कितना वो ले सकता है, कितना याद कर सकता है. मे बी एक स्टूडेंट he is able to learn like 20 vocabulary words, the other is not. So in case if you're taking that pressure, this much I have to cover, so not be able to, then you land up in anxiety, no? So this depends on student to student that how much he can do. So I'll say here कि हर बच्चे को अपना एक प्लान बनाना चाहिए. Maybe take advice from the teacher और अपना एक प्लान बनाए, because ChatGPT ने तो अपना बना के दे दिया, but आपने जेनेरिक सा बना के दे दिया which is for everybody. So आपको आप कितना याद कर सकते हो, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, and how much you have to increase. Like अगर आपको 100 words per minute आप पढ़ रहे हो रीडिंग के लिए, so how you will increase फटाफट किसी और उसको, तो you have to practice every day. This is what we tell our students, every day you have to increase your time speed. So जहाँ पे हर बच्चा अगर अपने को assess करे और अपने लिए बनाए, so that would be wonderful. So this is great. All right, so with this we have come to an end of this session. So thank you so much for the valuable inputs that you have given to us, and thank you so much for coming here. It's been a really nice and a very learning experience for me, and I'm sure everybody who's watching. So thank you once again. Thanks. It's my pleasure, Sonali, inviting me.